Hello everyone, welcome to 30 Art Circle, here to basically rationalize the monstrosity basically that happened in the first test between Pakistan and Bangladesh and what we basically saw yesterday. It won't be a lie to say that Pakistan cricket is in a crisis. But there are some good things happening with 30 Art Circle at the same time. We are here with our first guest. Absolutely honored to be joined by Mr. Saad Nasir from ProSports for this one. First of all, Saad bhai, आप क्या हाल हैं आपके? How are you doing? I'm good, man. Thank you so much for inviting me, and you guys are doing some great work. So it's a pleasure to be here. Yeah, and it's an honor to be joined by such an esteemed guest, to be very honest. I know you might not be doing your best because of the loss yesterday, but we really hope you're doing generally well. Now we're gonna I'm start with good. basically the yeah we're gonna start with basically the elephant in the room, which is the pitch. Now, अब इस पिच का क्या सीन था? क्या पाकिस्तान क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पिच को रीड नहीं किया सही तरीके से? There was a lot of talk about it, and like even the hiring that happened of Tony Henry. क्या Yeah, पाकिस्तान टोनी हेमिंग को तो अभी थोड़ा सही हुआ है, सो आई डोंट थिंक कि वो कुछ ज़्यादा चेंज कर सकता था इतने से टाइम पीरियड में. यार पिंडी का सीन ये है ना कि आई थिंक दे वर डिसीव्ड बाय द कंडीशंस बिफोर द टेस्ट मैच. सो काफ़ी दिनों से yeah बारिश हो रही थी, ओवरकास्ट कंडीशंस थी. So I believe they thought कि it will play out as they expected. Green top सारे बातें कर रहे थे, seam yeah होगी, swing exactly होगी. They went with 4 pacers, but that backfired in the sense कि उसके बाद धूप निकली and जो पिच थी वो ब्रेक होती थी. स्पेशली शुरू का जो टाइम पीरियड था ना, तो 4 घंटे हमारे वेस्ट हुए थे, which turned out to be a good thing for Pakistan, don't get me wrong, क्योंकि हमने पहले बैटिंग करनी थी और हमने फिर 150 पे ढेर हो जाना था और इनिंग्स डिफीट थी. So that saved us a bit, but we did read the pitch wrong in a sense that you never go with 4 pacers in the yeah subcontinent. स्पेशली पाकिस्तान में जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है, और उसका बड़ा फायदा हो जाता है आपको 2-3 केसेस में. एक तो स्पिनर बीच में आप लगा देते हो तो आपके पेसर्स जो हैं उनको रेस्ट भी मिल जाता है. दूसरा पॉइंट ये है कि ऑब्वियसली सब कॉन्टिनेंट की पिचेस इसी तरह की होती हैं, और जो हिस्टोरिकल डेटा है कि इट टेंड्स टू फ्लैटन आउट, और फोर्थ और या फिफ्थ डे पे स्पेशली थोड़ी सी टर्न मिलती ही मिलती है, ज़्यादा बेशक ना मिले लेकिन मिलती है. सो आई थिंक दे रेड द पिच रॉन्ग. उनका आइडिया शायद ठीक हो कि ओवरकास्ट कंडीशन है, ग्रीन टॉप है, 4 पेसर्स, हाई क्वालिटी पेसर्स जो हम कहते हैं वो हैं, दे बोल आउट बांग्लादेश, बट दैट बैकफायर्ड मैसिवली व्हेन द कंडीशंस चेंज्ड. और फिर आपके पास कोई बफर ओवर्स करवाने के लिए आपका जो पार्ट टाइम स्पिनर है सलमान अली अगा, दैट ही बिकेम द फ्रंट लाइन स्पिनर, ही बोल्ड 30 ऑड ओवर्स. वहीं पे अगर आपके पास अब्रार अहमद होता है या इवन नोमान अली होता है, नोमी पाइन होता हाँ है, वो भी एटलीस्ट वो वाला जो पीरियड है ज्यादा शायद रन ना खाते, कंटेन कर लेता, आपके पेसर्स को रेस्ट मिल जाता. वो भी नहीं हुआ. और कंप्लीटली मुझे मुझे जो मेनली इशू था, आई डेंट उस वक्त मुझे भी लग रहा था हाँ ठीक है चलो 4 पेसेस इन्होंने सोचे हैं, कुछ सोच के किया होगा. माय मेन yeah इशू वाज कि दे डिड नॉट हैव अ प्लान बी. दैट्स व्हाट कॉस्ट अस एट द इसी एंड. पे प्लान बी था नहीं. इसी पे बेसिकली मैं आना चाह रहा था. सो वी हर्ड ऑन द पीसीबी पॉडकास्ट फ्रॉम जेसन गिलेस्पी. Basically interesting is Salman Ali Agha as a frontline spinner. He said that he has that ability, and we, Yeah. to be fair, saw that in Australia too, and in domestic cricket too as well. Now, how how much does that kind of thing is going to go on from now? हम क्या अब सलमान अली आगा को आगे जाके ट्रस्ट करेंगे नहीं करेंगे? बिकॉज इस टेस्ट में we kind of saw that he doesn't have that kind of inability जो आपको अब्रार प्रोवाइड कर रहा था, या फिर on the other side Mehdi Hasan Miraz was providing. So Salman Ali Agha is a part-time spinner. He cannot be a frontline spinner, never. Second spinner, third spinner in some cases when the pitch is providing you something. लेकिन अगर आप उससे expect कर रहे हो कि वो 30 ओवर निकालेगा आपके टेस्ट मैच में, तो वहीं पे आप गलत हो. गिलेस्पी वगैरह में कुछ देखा होगा, I'm pretty sure. On some days, Salman Ali Agha can be more than a part-time spinner for you guys. Like Yeah. this wasn't a test match to try that.
He's a decent player who can trouble the batters when the pitch is assisting him. लेकिन जब pitch ही बिल्कुल flat हो गई हो तो सलमान अली आगा या कोई भी और पार्ट टाइम स्पिनर हो दुनिया में या हिस्ट्री में वो कभी भी आपको फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं मिल सकते. यू ऑलवेज फ्रंट लाइन स्पिनर का मकसद क्या है? दे स्पेशलिस्ट, दे डू दैट. उनका रोल ही वो है, उनकी जॉब है, वो नौकरी है. सलमान अली आगा की नौकरी नहीं है. सलमान अली आगा हमें स्कोर करके दे देना 50 रन, वो उसकी नौकरी पूरी होगी. उसके ऊपर जो वो देता है वो एडवांटेज है. सो यहाँ पे आपने थोड़ा सा मुझे तो लगता है लैग किया था. डेफिनेटली. एंड दानियाल रसूल ने भी हाईलाइट किया था कि अगर पिच असेस नहीं कर रही होती तो एक स्पिनर ऑब्वियसली इतना ज्यादा एक फ्रंट लाइन स्पिनर का एक्सपीरियंस होता है कि ही कैन रीड द फीट ऑफ द बैट्समैन स्टफ लाइक दैट. नाउ to cut you off, you did see that with Shakib. The ball wasn't turning that much. Mehdi ne to chalo he's a front line spinner 4 wicket li. Shakib is an all-rounder, right? He took 3 wickets, outsmarting the batters with his experience. डेफिनेटली. नाउ अगर हम बैटर्स की तरफ आए फोर्थ इनिंग्स में, not the fourth innings, sorry, third innings. उसमें जो है a lot of the wickets felt like brain fade moments. Yeah, 100%. It comes to like block, and then there was all of a sudden there was a brain fade, and then they would just come out of the crease and basically go for a big shot. आपके ख्याल में इसका क्या रीजन था जो आउट ऑफ नोवेयर इस तरह के मूवमेंट्स नजर आ रहे थे? I was very disappointed in Abdullah, Shafiq, Babar, and Saad Shakib. They were the 3. Abdullah was set, right? Babar Azam, we all know, is a quality batter who's been terribly out of form. Saud Shakil, another one who, पता नहीं उसने क्या किया. I don't know, where was the brain fade moment? या तो उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि we're going to post a big total 150 तक की हम किसी तरह लीड लेके कुछ कर लें. लेकिन वहाँ में मसला यही आता है ना कि the caveat is कि you're losing wickets, especially अब्दुल्ला ने जिस टाइम पे वो शॉट खेली नहीं बनती थी. अटैक कर रहा है स्पिनर को, फुटवर्क गोइंग नोवेयर. उसके बाद बाबर आजम इज लाइक आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, मैचिंग इन अपनी बेस्ट शॉट पे अगर वो बंदा इनसाइड एज पे आउट होता है ना तो देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग. और फिर साउथ शकील का भी ब्रेन फेड मोमेंट था यार. आई वाज सो डिसअपॉइंटेड. ही वाज ब्रिलियंट इन द फर्स्ट इनिंग्स और उसके बाद ही जस्ट थ्रू इट अवे. जिस पोजीशन में पाकिस्तान थी वहां पे ही न्यू, एंड ही इज द वाइस कैप्टन नाउ, ही न्यू कि यहाँ पे मैंने अपनी विकेट लूज की. वी आर सर्टेनली लूजिंग दिस टेस्ट मैच. एंड ये पाकिस्तान का काफी अर्से से मैं देख रहा हूँ यार, मुझे सदियों हो गई क्रिकेट देखते हुए. एंड आई न्यू बिफोर द स्टार्ट ऑफ द थर्ड इनिंग्स, मैंने ट्वीट भी किया था, मैंने यार कोलैप्स आ गया. आई नो दिस टीम, आई नो द मेंटालिटी ऑफ पाकिस्तान. नहीं वो आई डोंट नो प्रेशर ले जाते हैं या गेम अवेयरनेस तो है नहीं हमें, वो सबको पता ही है कि गलत टाइम पे गलत शॉटें खेलते हैं. और खैर आई वोंट लुक टू मच इनटू दैट. कोलैप्स होता है पाकिस्तान का. द इशू इज कि उस टाइम पे वो शॉटें नहीं खेलनी चाहिए. और हमसे बेहतर वो लोग जानते हैं यार, दे प्ले क्रिकेट फॉर अ लिविंग. और इस पे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है. मतलब या तो ये बांग्लादेश की बॉलिंग which was pretty decent by the way, if the batters were unable to play a good delivery. I understand hearty credit to the opposition. You throwing their wicket away, handing them a victory on the plate, that was awful. Right. And so आपने mention किया कि they were probably thinking about posting a big total जल्दी runs करके. And so that basically sends us into this nuanced discussion about the strategy and the mindset of this cricket team under Shan Masood. So I want to branch towards that. Shan Masood की captaincy in the field, how did you feel about that? Because I saw a tweet जिसमें था कि where were the funky fields we were promised and stuff like that, and was it very similar to what Babar Azam used to do? To be fair, I think bowlers को जो change वगैरह सही से किया था. I feel like. Yeah, I honestly felt Pakistan wanted to win this test match. That's why they declared in the first innings. That was the strategy, that we need to go out on attack. Yeah. We played at a decent rate of 4 runs per over in the first innings. We declared with the intention that we are going to bowl out Bangladesh. That backfired. That's not particularly on Shan Masood के हमारे
एक पोर्शन है उसका शान मसूद एंड द टीम मैनेजमेंट पे कि they were unable to read the pitch properly, but the second part where their strategy was to win the test match and declare early and try to bowl Bangladesh out. That's not on Shan Masood and the management है, मतलब they have to take the blame, लेकिन थोड़ा सा उसको phases में divide करो ना. इसी तरह similarly फंकी फील्ड्स की जहां तक बात है ना, क्या 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 करे वो, फ्लाई स्लिप खड़ी करते क्या करे. आई मीन बांग्लादेश प्लेड brilliantly. You have to give them credit for that. We were poor in the field. We dropped 3 catches. Maybe this lead जो उन्होंने 100 रन से ऊपर की ले लिया, this could have been under 50, or maybe we could have led in the third innings as well, क्योंकि हमने 3 catches भी drop किए. So that's on us. Our performance in the field, our performance with the ball was below par. Bangladesh, to their credit, were brilliant with the bat. Mushfiq Rahim scored 191. Sharman Islam was brilliant with 93. Momin al-Haq 50. Mehdi Hassan Miras 77, I guess. They outplayed you with the bat. They had a clear template. We did not, because we did not have a contingency plan in place. That's where we lost match. इस पे नहीं है ये शान नजूर ने फंकी फील्डिंग नहीं सेट की. बाबर आजम भी यही करता था क्या, मतलब बाबर आजम, we all know, I love Babar Azam, but he wasn't a great captain. Shan Masood showed us signs in Australia कि हाँ ठीक है, एक तो wickets manufacture हो गई, लेकिन what do you do when fielders drop those catches? फिर funky fielding कहाँ से? Salman Ali Agha dropped a catch, Babar Azam dropped a catch, and Mohammad Rizwan dropped a catch. So you had your chances. You had them 208 for 5. उसके बाद you dropped those catches, which led them to a historic victory. Yeah. So basically, it was we basically dropped the match on multiple. No, not really. That was one of the factors. We dropped the match because we dropped catches. We dropped the match because we were awful with the ball, with the bat in the third innings. We dropped the match the day we decided not to play a spinner. We dropped the match when we decided कि हमारा एक ही प्लान होगा और इसी पे चलेंगे. We did not have a contingency plan. So काफी ज्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं. टेस्ट क्रिकेट को आप एक इंसिडेंट पे या 3 ड्रॉप कैचेस पे नहीं कर सकते. टेस्ट क्रिकेट इज हार्ड. T20 होती, वनडे होती, आई वुड सेड हाँ ये यार 3 ड्रॉप कैचेस हुए तो इसकी वजह से आके. लेकिन Bangladesh were better than us in all 3 departments. They were better than us in the field. They took some stunners. They were better than us with the ball, and they were better than us in the bat. So they had a clear template. We did not. These are the factors that led us to the loss, in my opinion. Definitely, and I think there's always multiple factors in Test cricket. But आपने bowler की बात की कि the bowlers were underperforming, and so अगर हम 4 फास्ट bowlers की बात करें, आप उन्हें किस तरीके से रेट करेंगे? If we go one by one, let's just start with Naseem Shah. How would you? Naseem, how would I rate his performance? How would you generally? What is your basically? Naseem was decent. He was not bad. उसका मसला ये, he hasn't played a lot of 5-day cricket recently. अभी जाके 4-day cricket का एक पिछले शाहीन का मैच खेला था काफी अरसे बाद उसने. He's not consistently playing longer format cricket, but still I believe Naseem Shah was one of our few shining lights from the ball. He was good, he was decent. मसला ये आता है ना फिर इमाद के, जब आप 4 पेसर्स खिलाते हो ना तो पेसर्स को रेस्ट नहीं मिलता, और नसीम, शाहीन, अली, शहजाद को रेस्ट नहीं मिला. इस वजह से जब लिटन दास ने उसे 18-20 रन मारे नसीम को, he was done, वो थक चुका था. और टेस्ट क्रिकेट इज रूलिंग फॉर्मेट. नसीम शाह हो या जसप्रीत बुमराह हो, उससे बोलो ना इतना वर्कलोड करे, उसके साथ भी एंड में जाके यही होगा. अब वो जब उसका स्टैमिना रन आउट करेगा उसके साथ भी ये होगा. फास्ट बॉलर्स का बड़ा इशू होता है. और मुझे सबसे ज्यादा डर जो है ना वो यही है कि नेक्स्ट टेस्ट मैच में नसीम फुली रिकवर करके होगा, क्योंकि ही विल बी फटीग्ड इन दिस रावलपिंडी हीट. उसके बाद फिर आ जाते हैं who I think was our second or probably tied with Naseem as a bowler. That was Khurram Shahzad. I really liked him. He was great.
उसने जो 2 बोल्ड मारे दैट वाज ब्रिलियंट। और यही डिफरेंस होता है। मोहम्मद अली का मुझे लग रहा था वो थोड़ा थक गया है, खुर्रमशहजाद आई थॉट वाज गुड। ये ही इज बोल्ड लॉन्ग स्पेल्स फर्स्ट क्लास पे पूरा रगड़ा खा Yeah. के आया है। बट एक तो लाइन उसकी बड़ी अच्छी थी, ठीक है, बीच में सारे हमारे बॉलर्स थोड़े वेवर्ड हुए हैं। आई थिंक खुर्रमशहजाद डिजर्व्ड अ फ्यू मोर विकेट्स, लेकिन उसके 2 बॉल्स बड़े अच्छे थे और ही केप्ट इट टाइट, ही वाज वेरी डिसेंट। देन कम्स इन मोहम्मद अली। आई थिंक उसका भी सीन ये था कि स्पेल्स में बैचेस में उसने अच्छी बॉलिंग कराई, पैचेस में, लेकिन कंसिस्टेंटली वो एक ही लाइन लेंथ और उसके ऊपर नहीं था। सो आई लाइक मोहम्मद अली बट आई feel के Pakistan missed a trick when they did not give the new ball to Muhammad Ali when they got the second or third new ball. Yeah, yeah. उस I टाइम think पे they were basically हाँ, basically following the template they had Naseem template ना, Shaheen. वही ना, contingency plan नहीं था। मोहम्मद अली we all know is a decent bowler with the new ball as well. ट्राई तो करो ना यार, Yeah. ट्राई नहीं किया उसे। तो उसमें उसको ज्यादा मैं बॉलर्स को इसलिए ज्यादा ब्लेम नहीं मैं दूंगा, ठीक है, वी ऑल एक्सपेक्ट अस टू टेक 20 विकेट, एक्सपेक्ट देम टू टेक 20 विकेट्स अगेंस्ट बांग्लादेश, लेकिन पिच फट्टा हो चुकी थी और वो आपने रीड नहीं की। उसके बाद आते हैं शाहीन पे, who I feel was our weakest bowler. I think he's struggling ever since he came back from injury 2022 में इंजर्ड हो गया था। पहले हुआ था श्रीलंका में, फिर उसके बाद फिर वर्ल्ड कप में जब इंजरी हुआ था, World Cup. he hasn't been the same. Shaheen Afridi was one of our few shining lights in Pakistan cricket. He's fallen off completely at the moment, and I feel 2 reasons है इसके, एक फिजिकल भी और एक मेंटल भी है। बहुत ज्यादा चीजें होंगी in पाकिस्तान क्रिकेट में ओवर द पास्ट ईयर, जिसमें शाहीन और बाबर वर द मेन कैरेक्टर्स, राइट? सो मेंटल इफेक्ट तो होता है बहुत ज्यादा। उसके बाद शाहीन was expecting a baby, right? मैं होता पर्सनली आई वुड सेड शाहीन जस्ट गो एंड एंजॉय विद योर फैमिली, बी विद योर वाइफ, ये बहुत स्पेशल मोमेंट है, एंजॉय करो इसे, कम बैक रिफ्रेश्ड, बांग्लादेश सीरीज चिल मारो, यू कम बैक इन द इंग्लैंड सीरीज। मसला यहाँ पे ये होता है कि शाहीन हिमसेल्फ वुड हैव थॉट कि अगर मैं बैठ गया तो मेरी जगह तो कोई और ले लेगा, इनसिक्योरिटी तो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। उसके बाद I mean, या शाहीन शाहीन की जगह मतलब कोई ले भी सकता है। ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। द ड्रॉप ऑफ जो है ना अभी शाहीन का, मेरी स्टार्टिंग 11 में तो नहीं आता फिलहाल, क्योंकि आई फील आई लव शाहीन, ये मैं क्लियर करूँ, आई लव शाहीन अफरीदी। आई बिलीव अभी भी टाइम है उसके पास, ही कम बैक गुड, बट अभी उसे रेस्ट करना चाहिए टू रिकवर मेंटली, टू रिकवर फिजिकली, क्योंकि ही इज बीन विद द टीम कंसिस्टेंटली एवर सिंस ही रिटर्न फ्रॉम इंजरी। फिर उसके बाद ये सारे, फिर वो याद है हमारा बॉन्डिंग कैंप जो हुआ था काकुल में, सारे गंद एक साथ मिला हुआ है, उसको थोड़ा अलहदा करो, उसको इजी करो। उसके बाद when he's fit fully, ideally I'd want him to play a few first class matches and bring him back to the team, लेकिन I'm pretty sure वो possible नहीं होगा because first class cricket है नहीं before the England series if I'm not wrong. तो bring him back in the England series, then we'll see. लेकिन next test match हम से rest कराओ। His line was wayward, he wasn't bowling at full tilt जो हम expect करते हैं शाहीन से, although his average speed was decent, but he Yeah. was the slowest out of the 4, and we don't expect that from Shaheen. Which was very surprising to see. Like a Shaheen, there was a time when Shaheen used to have the like highest average speed, but Yeah, yeah. Uh, so basically, the same goes for Babar right now. बहुत ज़्यादा fall off हुआ हुआ है, basically बहुत. from what we expect from him. So the question is all of this temporary या फिर we have to accept the fact कि ये एक permanent fall off आ गया? I can't predict that with Bangladesh or any cricketer who's shown us that he's quality. Yeah. ड्रॉप ऑफ आते हैं, ये बहुत ज्यादा मैसिव ड्रॉप ऑफ है, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा फॉल ऑफ आ जाएगा ना बाबर का। द वे ही वाज स्कोरिंग रन्स इन एवरी फॉर्मेट और उसके बाद ही कैन नॉट बाय अ रन। सो टेक्निकल इशू है, इस पे मैं ज्यादा आई एम नॉट एन एक्सपर्ट सो आई वोंट बी कमेंटिंग ऑन दैट, बट इफ इट इज अ टेक्निकल इशू
So he needs to resolve it. He needs to listen to people because I've seen some tweets and some uh, information I've got that Babar does not like to get what do you say advice from people. He believes that he'll resolve it on his own. ठीक है कुछ लोग होते हैं जिनको होता है कि यार I know better than you, but I feel अगर technical issue है Babar needs to consult a few experts. अगर technical issue नहीं है तो फिर he needs to work on his mental fitness. That's it. Get a therapist. I don't care. लेकिन यहाँ पे वो भी एक बहुत बड़ा टैबू सब्जेक्ट है ना पाकिस्तान में कि यार थेरेपी oh my god Unfortunately. you need it sometimes man. There's nothing to be ashamed about. Yeah. हाँ. वो भी मतलब Even sorry last point बोल लूँ Babar and Shaheen have been the two main players in all of this gun that PCB में जो हो रहा है ना. So maybe it's due to their own fault या नहीं हो उनकी fault और गन में घुस गए हो वो किसी तरह लेकिन निकलना भी तो है ना इस तरह से and they need some rest, some time apart from the to be Pakistan fair, cricket camp. yeah. To be fair, toxic work environments का हम सब पे ही बुरा effect होता है, and I'm sure these people are not from different planets. But yeah, even जो आपने बात की fall off की कि whether it's technical, whether it's psychological, generally I think हमारे चारों Fab Four players, Williamson, Smith, Root, and Virat Kohli, they've all had their fall offs, and they came back. They came back very very strongly, all of them. So I'm sure this the ability Babar की है, the way he scored his runs before. I'm sure वो ability वापस आ सकती है. So, now, यार आ तो सकती है but he'll need to do a few things for that, right? He'll need to work on this. यहाँ से जब तक बंदा clear नहीं होता ना तब तक कुछ भी नहीं होता. And this isn't just about Babar or cricket. ये हर life के aspect में होता है. आप बेशक काम करते हो आप ना करते हो आप सिर्फ घर पे रहते हो ये इश्यूज होते हैं जब तक आप मेंटली फिट नहीं होते आप परफॉर्म नहीं कर सकते अपने 100% पे. और मेरे लिहाज से जो मेरी एनालिसिस है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर मोर देन हिज टेक्निकल इशू इज दैट कि बाबर हैज नॉट बीन एबल टू क्लियर हिज माइंड. yeah, and even जो मैंने Fab Four का mention किया, they all went on their hiatuses and वहाँ पे उन्होंने जाके अपने आप को address किया था. We all remember recently जो विराट कोहली का hiatus था बीच में before the Asia Cup, this Asia Cup the one 100 score की थी. He went away बिल्कुल social media से out of the picture, out of the light, and then he came back. He was unstoppable. He was giving interviews and he was very open about his mental health problems and the way he addressed those. I mean, yeah. सबकॉन्टिनेंटल इशू है ये कि हम ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे नहीं देते हैं. कुडोज टू विराट कोहली कि ही एड्रेस्ड दोज इश्यूज. और इसी तरह आई वुड लाइक कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो भी थोड़े से ओपन माइंडेड हों और वो थोड़ा सा सोचे कि हाँ यार इसमें पूरी दुनिया स्ट्रगल करती है, कोई नई बात नहीं है. और दे शुड बी कॉन्फिडेंट इन देयर सेल्व्स इन कि अगर हम ये कह भी दें अगर सोशल मीडिया पे रकस होता भी है तो होता है यार, हमें क्या फर्क पड़ता है. हमें तो मेंटली फिट होने हम ताकि पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर सकें. लेकिन आई डोंट थिंक इस मुल्क में ये चेंज जल्दी आने वाला है. That's basically a societal problem more than a cricket problem, unfortunately. So I just want to come back to खुरम शहजाद. हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया में कितना अच्छा खुरम शहजाद ने परफॉर्म किया था. It was very unfortunate that he got injured, वरना I think he could have contributed for Pakistan in the second test and the third test too. And so I was genuinely expecting him to do well, which he did. थोड़ा सा obviously fall off था, but still he did really well. यार इस पिच पे फॉलो भी होगा किसी भी पिच का. हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है. Now Hamir Hamza की a lot of people are talking about him कि he also performed really well Australian series में. But I still thought कि खुरम शहजाद needs to play ahead of him. Now अब अगर शाहीन की आप replacement की बात कर रहे हैं, do you think Mir Hamza should be the one replacing, or should they just bring in Abrar and play these three fast bowlers, Naseem Shah, Khurram Shahzad and Mohammad Ali? I'd bring in Mir Hamza for Shaheen and
change to Muhammad Ali with Abrar. Right, right. हाँ So, खुरम two changes. देखो खुरम शहजाद और मीर हमजा के ना bowling profile थोड़ी different है. मीर हमजा is a brilliant new bowler. Khurram Shahzad Yeah, is a good first change. Muhammad Ali yeah. provides you with both. I like Muhammad Ali, but I think अगर in कोई combination बनाना है ना, so unfortunately Muhammad Ali has to go out for a car and Mir Hamza replaces Shaheen ताकि आपको वो new ball वाला aspect भी मसला ना करे, which left arm angle भी मसला ना करे, और फिर spinner तो चाहिए. That makes perfect sense. Acha, coming towards batting, Mohammad Rizwan, how well is he performing? He just seems unstoppable at this point. हाँ. So, yeah. Yeah, Rizwan has been unfortunate that he was dropped for Pakistan. Yeah. It was I think it was unbelievable for Pakistan playing Sarfraz Ahmed ahead of Rizwan in Australia first test. In Australia, Pakistan का scene ये है कि I don't mind. Sarfraz is a brilliant keeper and a good batter in Pakistan. And yeah, Asia में कर लो. Uh, लेकिन सेना का रिकॉर्ड इतना फिट है ना मोहम्मद रिजवान का, Yes, एंड ही इज definitely. मैन ऑफ क्राइसिस. आज ही हमने पॉडकास्ट में भी पूरी लिस्ट दी है कि कहाँ कहाँ उसने पाकिस्तान को आके सेव किया, और दिस वाज वन ऑफ दोज इनिंग्स के अगर रिजवान ना होता तो 171 रन निकाल लो. Maybe Sarfraz could have replaced that. वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन whenever Pakistan is in a crisis, Rizwan खड़ा होता. I still feel second innings में थोड़ा सा Brainfade moment उसका भी था, but overall I wouldn't I wouldn't put too much blame on Rizwan. I think he was our best batter. He has been I our mean, best batter for a time period, and he's a very good keeper except for that dropped catch. yeah. I mean, second innings में lead रिजवान की वजह से ही मिली थी. To be fair. Now, uh, final few topics. I've always felt that Abdullah is a sort of player who can emulate that Pujara type role. Kohli को protect करने के लिए. It's a broader issue, not restricted to this series. Do you think that Abdullah should be playing at number 3 of Pakistan and Shan should be opening instead? No, I don't believe that. Abdullah is a brilliant opener. His record is very good. Wasn't really good in Australia, I agree. I still feel he's probably the most talented batter in Yeah. this, apart from Babar Azam, who's fallen off again. Lekin Abdullah has a very solid record. I believe that one down पे उसे shifting करना चाहिए. I think he plays as an opener really well. He वो जो बॉल की शाइन होती है ना, उसे टैकल करने में बड़ा impressive है अब्दुल्ला. I just cannot fathom कि उसके brain में क्या चलता है कभी कभार, because that wasn't a shot to play. He's an experienced Test cricketer now. He is Pakistan's leading opener now, and he has to take some more responsibility. I feel there's a big score coming around the corner for Abdullah Shafi. The way he was playing in the second innings, Pakistan second innings and third innings, I feel he'll realize it, or I'm sure management ने भी उससे बात की होगी कि भाई थोड़ा इंसान हो, कोई मसला नहीं था, वहाँ पे तुम टिक जाते तो पाकिस्तान शायद मैच भी ड्रॉ कर जाता, जीतना वहाँ से थोड़ा मुश्किल है. बट I feel Abdullah को ओपनर नहीं रिप्लेस कर सकते. I don't believe that. Yeah, so I'm not saying it based on कि Abdullah is not a good player or something. What my argument is that Shan might not be the natural number. And जहाँ तक I was listening to someone, and they were like कि एक number 3 का काम ये होना चाहिए कि they should protect the best batter who plays at number 4, and basically the Pujara or Usman Khwaja or Labushan type role की मैं बात कर रहा. I was basing it off that. Yeah, issue ये है, Emad, if Shan plays as an opener, Abdullah Shafiq will come in early. It's a good difference.
That makes perfect sense now. That I makes feel perfect sense. Abdullah has more to him than Shan Masood as an opener, and I feel अगर किसी ने लंबा खेलना है ना तो वो अब्दुल्ला और साइम ही है rather than Shan. The issue with Shan Exactly. is that he has an average of 28. That's just Ah, not good enough. And I feel for Shan Masood because I believe there's a really good player in there. He's been performing in county solitary innings इधर उधर भी हैं पाकिस्तान के लिए yeah, लेकिन yeah, he hasn't been able to translate that to international cricket जो उसकी first class cricket में performances हैं और ये बहुत बड़ा question mark रहेगा शान मसूद पे. He needs to pull up his socks and if he can perform then good enough. If he cannot तो फिर क्या करें यार. मतलब we have to look past it. We can't carry a dead weight in our batting unit and especially in the top order. It's not like yeah, कि पांचवा या छठा या सातवां नंबर का प्लेयर फेल हो रहा है. It's one down position या ओपनर जो शान मसूद ओरिजिनली है. So that's a huge question mark on his whole career, I believe. Hmm. So we talked about Pakistan a lot, and but we have to talk about Bangladesh. The way they Yeah. performed in this Test match outclassed Pakistan in every way. In the midst of political chaos, when a few of these players have cases at home on them as well. So how would you comment on their performance based on Yeah, the so, political incident that has happened in Bangladesh? सबसे पहले congratulations to them. This is much needed for the country, I believe. Bangladesh भी पाकिस्तान की तरह they're a cricket mad. They love football too, but they're a cricket mad nation as well. They haven't been able to perform जिस तरह का उनका अरसे से एक सेटअप चलता है. 99 में उन्हें टेस्ट स्टेटस मिला था और उसके बाद बांग्लादेश बस यूं ही चलती रही है. ठीक है, एक थोड़ा सा उनका Yeah, ओडीआई क्रिकेट में या टी20 में राइज आया था अंडर मशरफ मुर्तजा, लेकिन फिर वी सॉ फॉल ऑफ. This, in my opinion, is one of the biggest victories ever. Along with that away test in New Zealand, which was a remarkable achievement. This is क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी ना कि मुल्क में कू हुआ, वहाँ पे ऑल ऑफ दैट पॉलिटिकल स्टफ, उसके बाद फ्लडिंग हुई है, लाइफ yeah, स्टॉक लाइव्स वहाँ पे वो इफेक्ट हुए. उसके बाद शाकिब अल हसन पे मर्डर चार्जेस. आई मीन एवरीथिंग दैट वाज गोइंग रॉन्ग फॉर देम ऑफ द फील्ड. I believe that spurred them on to bhai nahi, we need to provide the people of Bangladesh with some happiness. Or the way they played here, I haven't seen Bangladesh play this way against Pakistan ever. They've come close to beating us in tests. वो इंजी वाला मुझे याद है. उसके अलावा 2003, वनडे में, सॉरी, 2003, या, I think. ओह या इंजी. उसके बाद फिर they did beat us in one days. उसके बाद लेकिन टेस्ट क्रिकेट में पहली विन थी उनकी पाकिस्तान के अगेंस्ट. एंड we all know we're not a good side anymore, but हमेशा एक रिकॉर्ड तो होता है ना कि यार इन्होंने हमें कभी नहीं हराया. बांग्लादेश came to पिंडी. they said कि तुम्हारे घर में हम हराएंगे, हमारे मुल्क में ये चल रहा है, but they took the energy from that कि भाई we need to do something for our country. And the way they played, they got Pakistan to 16 for 3 if I'm not wrong. या क्या था, 3 early wickets. ठीक है, Something along वही, those lines. हाँ 16 था या 24 था समथिंग. तो खैर 3 अर्ली विकेट्स. उसके बाद खैर पाकिस्तान की एक ही पॉजिटिव था दैट पार्टनरशिप रिजवान और सऊद शकील की. Yeah. उसके बाद the way they batted, Salman Islam, I didn't know he had it in him कि इतना फिट खेलेगा. 93 उसने मारे. The counter attacking cricket Litton Das played. बीच में मोमिन अल हक ने सही consolidate किया along with Mushfiq और Rahim. Then played second fiddle to Litton Das. He attacked Naseem Shah. They came out with a plan. They know कि हमने कब टारगेट करना है, कब consolidate करना है, कब हमें 2.8 के रन रेट से खेलना है और कब हमें 4 के रन रेट से खेलना है. फिर उसके बाद दैट पार्टनरशिप बिटवीन मुशफिक और रहीम एंड मेहदी हसन मिराज वाज probably the turning point of the match. That changed the whole complexion.
the way they do bat it. I feel for Mushfiq Rahim. 200 उसका almost आ गया था. Yeah, yeah. Like unlucky for him, but Mushfiq is one of the most underrated wicket keepers in world cricket right now. और he has been a star for Bangladesh. कब से खेल रहा है? और सबसे फिट बात, apart from all of this, apart from all of his achievements with the bat in Test cricket, the best bit I like was that he donated his match fee to the flood victims in Bangladesh. Yeah. That's And that's Mushfiq, what it's all about. if you look at Mushfiq Rahim's career, so it looks very similar to Anderson. कि मतलब after 30 का जो rise जो है, because they were showing this graph on He's the like broadcast. he's like fine wine. Yeah, 2017 के बाद he's been astronomical. His rise has been astronomical. Yeah. Kudos to him, man. He adopted his adapted to his role in Test cricket. We all know he was good keeper in limited overs cricket as well. ऐसा नहीं है उधर भी उसकी काफी performances है, लेकिन Test cricket उसने he really likes that format. I believe that's his best format, and he's proven it. And he's probably Bangladesh's best Test batter in history, if I'm not wrong. अगर उसका रिकॉर्ड उठा के देखो, क्रूशल इनिंग्स उठा के देखो, आई एम श्योर शाकिब भी है वहाँ पे, तमीम भी है, बट आई फील मुशफीक रहीम इन टेस्ट क्रिकेट फॉर मी इज बांग्लादेश's best ever batter. So one of my heartbreaks in cricket earlier as a cricket fan was the 2015 wali series where we lost 3-0, because I watched every ball of that series, and उसमें we were basically outclassed in every way. Now I feel like कि अगर बांग्लादेश ने हमें हरा दिया, it would be something much bigger than that. Obviously. Second test. So what do you feel? If they manage out a draw or a win, that's the biggest series win or their biggest cricket achievement to date. Beating 3-0 Pakistan in an ODI series, in a bilateral ODI series with literally no meaning was good. But this is something much, much bigger. That was the start of Bangladesh's rise in ODI cricket after the World Cup, after defeating India. लेकिन उस देखो ना, एक तो टेस्ट क्रिकेट है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, ठीक है, पिनिकल ऑफ क्रिकेट आई बिलीव इज टेस्ट क्रिकेट. सारे जो क्रिकेटर्स इतने अच्छे से खेलते आ रहे हैं जो बांग्लादेश की टीम में भी होंगे, मुशफीक से पूछ लो, शाकिब से पूछ लो, व्हाट डू दे वांट टू विन इन टेस्ट क्रिकेट या ओडीआई वर्ल्ड कप ऑब्वियसली. लेकिन अगर वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते टेस्ट क्रिकेट, तो if Bangladesh do manage to nick out a draw, I think this is their greatest cricketing achievement in history. If they do, which might come true. Yeah, but I don't know. At this point, it's 50-50. कि वो loss होगी, win होगी, draw होगा. So I don't know. Oh, okay. They can't lose the series, so that's a positive for them too. definitely, yeah. Acha, now, so thank you so much for joining us, Mr. Saad. It's been such an honor, and it was a wonderful conversation. I had so much fun. What are we expecting from ProSports coming up, and yeah. Yeah, ProSports, बहुत कुछ. अभी तो खैर हम फुटबॉल, क्रिकेट और WWE पे फोकस कर रहे हैं. We've got some plans for other sports as well. थोड़ा सा हम टेस्ट कर रहे हैं waters with the MMA stuff and e-sports stuff. दोनों के अभी एक पॉडकास्ट भी है. So I feel जो आइडिया है ना प्रो स्पोर्ट्स का, वो ये है कि we need to change the landscape of sports media in Pakistan as a whole. क्रिकेट की बहुत ज्यादा आपको इन्फो मिल भी जाएगी और हम भी देंगे, बिकॉज वी ऑल लव क्रिकेट. बाकी इतनी निगलेक्टेड स्पोर्ट्स है यार, वी नीड टू फोकस ऑन दैट टू. इतनी अचीवमेंट्स अभी एक अरशद नदीम ने पूरे मुल्क को पागल कर दिया, राइट? तो सोचो और कितने अरशद नदीम से निकल सकते हैं. एंड वी are the ones, the new generation is the one, you guys are the one, all rounders हैं कि हम प्रो स्पोर्ट्स पे हमेशा बात करते हैं कि you guys are doing some brilliant work. इस तरह के और आना चाहिए. It's not about pro sports only. It's about all-round stand. It's about grassroots cricket. It's about backward point. It's about cricket. It's about other such sporting channels जो पूरा एक ecosystem इस तरह का बनाएंगे हम सारे
कि पाकिस्तान की रिपोर्टिंग एटलीस्ट अच्छी हो जाए. हम नहीं चाहते कि कोई भी किसी का बच्चा पैदा हो तो उसके ऊपर वाटर मार्क लगा के दुनिया को सीने दिखा दे. दैट्स नॉट व्हाट वी वांट. दैट्स व्हाट प्रो स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट. क्लीन गुड And कंटेंट फोकस्ड ऑन द स्पोर्ट. किसकी किससे शादी हो रही है होने तो यार, तुम्हारी नहीं हुई हुई, हर एक की हुई होती है. आई मीन नॉट यू, मैं बाकियों से बात कर रहा हूँ. yeah, yeah, definitely. ग्रो अप. I'm genuinely intrigued that pro sports will become part of my learning process as a sports fan, like or sports वगैरह भी. And yeah, and I'm genuinely looking forward to whatever comes next. But thank you so much, Mr. Saad Nasir. Viewers, please subscribe to Pro Sports. They're bringing out some excellent content, basically on daily basis, right? ऑलमोस्ट डेली आता है यार. Yeah, yeah. So please check